Good afternoon, student. Today we study about acute respiratory tract infection, the common respiratory disorder among the children, and many cold. So सबसे पहले है common cold. What is common cold? This is the viral infection which is spread very fast in respiratory tract. Cold is a viral infection of the upper respiratory tract. The most common virus which cause common cold is rhinovirus. Symptoms: running nose. Initially, the nasal secretions are thin and later it becomes thicker. Cough and cold, fever, diarrhea, sneezing, fatigue, fever, sore throat. ये सारे किसके हैं? Symptoms है. Next is treatment. Treatment is what? Adequate rest to the child, plenty of liquids, use of humidifier in child bedrooms at night, which will help the child to keep this nose and chest clear, making him easier to breathe. Using children एक्टोमॉर्फिन या फिर टाइलोन और आइबोप्रोफिन. एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कॉमन कोल्ड है वो सर्दी खांसी को रिलेट करता है, जो कि हम जनरल बेसिस पे बच्चों में देखते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें वायरस का इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट. और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे? रनिंग नोज, इनिशियली नेजल सिक्रीशंस वगैरह, और म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, कफ कोल्ड होता है. ठीक है,
सो सॉर थ्रोट होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट है इसका एडिक्वेट रेस्ट।
So prevention of infected should be kept away from the children. Adequate nutrition and fruits to be given. Frequent hand washing, maintain hygiene and cleanliness. Keep a handkerchief while sneezing. Avoid to contact with area where infected person work. ओके, ये इस तरीके से हमको कॉमन कफ कोल्ड का देखो, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, हमको कॉमनली देखने को मिल जाती है, पर जनरली हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, बहुत ही कम होता है. सो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, कॉमन कफ कोल्ड रहता है और ये सब चीजें रहती है, तो इस तरीके से हमको चीजें रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लमेटिक होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये एक डिजीज पढ़ाई मैंने एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक की. ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिजीज जो है वो है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लामेटरी ऑफ द ब्रोंकाई व्हिच लीड्स टू द म्यूकस प्रोडक्शन ऑफ द and reduce breath difficulty in child. Coughing often bring up yellow greenish mucus. Types of bronchitis: acute bronchitis, if often caused by the same virus that cause cold, usually start as a sore throat, runny nose, and sinus infection, and then spread to airway. It can cause lingering dry cough, but it usually goes away from on its own. So chronic bronchitis, inflamed bronchi produce a lot of mucus, जिसे leading cough and difficulty getting the airway in and out of lungs. इस तरीके से होता है. फिर symptoms क्या रहता है? Symptoms: acute bronchitis, cough, shortness of breath, wheezing, rattle sensation in chest, discomfort, generally ill feeling or malaise, mild fever, chest pain, soreness, chest tightness, sleep disturbance, chills. Symptoms दिखने को मिलते हैं. Symptoms of chronic bronchitis is blood stained sputum, shortness of breath, frequent respiratory infection, worsen symptoms, wheezing, fatigue, headache, ये सारी चीज़ें. फिर आता है ट्रीटमेंट. एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स to relieve discomfort and pain. Medication called bronchodilators are used to open tight air passage in the lungs. Antibiotics may not be much helpful as it is viral infection. फिर आता है decongelants may also help to relieve the symptoms of analgesics and antibiotic to relieve the discomfort and pain. Medications वगैरह है ना, डिकॉग्निशन, lots of fluid भी secretion होगा, warm and moist air, upright and sitting positions देनी है, oxygen while humidifier, इस तरीके से.
So prevention in etiquette should be kept away from the children. Adequate nutrition should sorry, infected child should be kept away from the children. जो infected children है वो अब दूर रखना है बच्चों से, ठीक है. एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है, फ्रूट्स टू बी गिवन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, मेंटेन हाइजीन और क्लीनलीनेस करना है, ठीक है. कीप हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, हैंडकरचीफ. Okay, and limited exposure to the cold, damp environment is to इस तरीके से. फिर बात करते हैं निमोनिया की. सो निमोनिया मैं आपको कल पढ़ाऊंगी. आज के लिए जितना आज हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा हमने. Malnutrition, fever, follow loss of appetite, ये सब पढ़ा. So that's it for today. Thank you class. Thanks for watching.